Hello, dear student. Today is the class of Applied Thermodynamics BME 503. You have already studied in the previous semester what is the basic thermodynamics and what are the basic definitions or the laws of thermodynamics. So that concept we will apply in the industrial point of view. So it is very important to understand what is the subject applied thermodynamics is. So before starting, there are few topics that we will cover in this presentation. First one is the heat engine, and second one is the introduction and classification of IC engine. After that, we will study what is the basic terminology related to the IC engine, and after that, working principle of 2-stroke and 4-stroke engine. So we are just recalling few basic definitions or the laws of thermodynamics before starting. As we all know that what is first law of thermodynamics? First law of thermodynamics is nothing but the law of conservation of energy. What is law of conservation of energy? It said energy can be neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one form to the another form. After that, there is the second law of thermodynamics. There are two scientists, Kelvin and Planck and Clausius, that give the statement related to the thermodynamics. Why there is a need of second law? The important reason is that the first law of thermodynamics only tells how the energy is transferred from one form to another form, but it does not tell what is the directionality of the transfer of heat, how the energy is transferred from, or what is the direction related to it. That is the main drawback of the first law. So there is a need of second law that was given by the two scientists, Kelvin and Planck, and the Clausius. So we are trying to understand what is the thermodynamic concept of energy. All we know that हम सब जानते हैं what is energy, the capacity to do work. But there are two types of energy available. First one, the energy in storage, and the second is energy in transition. What is energy in storage? The internal energy of any body. Suppose there is a system, we can say that suppose there is a system and outer that there is surrounding. So in the system consists of lots of number of molecules, large number of molecules. So this large number of molecules, and each molecule exhibit certain amount of energy, and that energy is known as internal energy. So the first form of energy is the internal energy or the energy in storage, and the second form of energy is the energy in transition. हम ये कह सकते हैं कि एक एनर्जी वो होती है कि जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर रहती है, और सेकंड वन क्या होती है कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र के फॉर्म पे होती है या ट्रांजिशन के फॉर्म पे होती है. तो एनर्जी इन ट्रांजिशन हमारी क्या है कि अगर हम बात करें कि सपोज़ करिए आपका ये कोई XY प्लॉट है, तो एनर्जी इन ट्रांजिशन क्या है हमारा, जो भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम वन पॉइंट, सपोज़ करिए मैं अगर इसको 1 ले लूँ और इसको 2 कंसीडर कर लूँ, तो फ्रॉम 1 to 2 आपकी जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है दैट विल इनसाइड द पोर्शन ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिशन. तो ये दो किस्म की होती है. फर्स्ट वन इज़ द हीट एनर्जी, सेकेंड वन इज़ द वर्क एनर्जी और द वर्क ट्रांसफ़र. तो ये आप लोग ने बेसिक कंसेप्ट पहले पढ़ चुके हैं आप लोग इन द प्रीवियस सेमेस्टर. वी आर जस्ट रिकॉलिंग because it is very important to understand or to recall what is heat transfer and work transfer before starting of the course or before starting of this applied thermodynamics course. So energy in transition is nothing but the energy that can be transferred from one point to the another point is known as energy in transition, and energy in storage is the energy that is stored by the particle or the molecule. Okay, so it is clearly understand what is energy in storage and energy in transition. So now we are briefly talking about what is energy in transit. First one is the heat energy and the second one is the work energy. So heat energy is nothing but, or we can say that the basic definition of heat energy अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें हीट एनर्जी की,
the energy that can be transferred from one point to the another point. Suppose this is xy plot and this is point 1 and this is point 2. Suppose we are saying that the energy it is transferring from 1 to 2. So heat transfer said that the energy that can be transferred from point 1 to point 2 only due to the temperature difference. Means suppose that at point 1 the temperature is T1 and at point 2 the temperature is T2. So it means that when the temperature T1 is more than T2, the energy that is transferred from T1 to T2 is known as heat transfer. So all the form of energy that can be transferred from one point to the another point by virtue of temperature difference or due to temperature difference, that is known as heat transfer. And all form of energy that can be transferred rather than temperature difference, it will in the category of work transfer. तो जो टेम्परेचर की वजह से जो भी हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज़ द हीट ट्रांसफ़र. और जितने भी फॉर्म की हीट ट्रांसफ़र होती है अदर देन टेम्परेचर डिफरेंस, वो किस कैटेगरी में आएगी? आपकी वर्क ट्रांसफ़र में आएगी. तो ये आपका थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट ऑफ एनर्जी है. वी आर जस्ट रिकॉलिंग दिस कंसेप्ट. सो दिस इज़ द बेसिक definition of heat or heat energy. So the heat is a form of energy which is transferred from one place to the another place or one form to the another form by virtue of temperature difference. हमने पहले भी इसको डिस्कस कर लिया है कि क्या है कि by virtue of और due to temperature difference. ये आपका ऑफ है. It is always flow from higher temperature to lower temperature. तो हीट की बात करें या आप हीट एनर्जी की बात करें तो उसमें क्या होगा कि ये कब फ्लो होगी? फ्रॉम हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ. ये कभी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होगी. और सेकंड हमारी डेफिनेशन क्या है? वर्क. और वर्क एनर्जी कहते हैं, कहीं किसी बुक में लिखा रहता है, और इन सम बुक इट इज़ रिटन एज वर्क ट्रांसफ़र. तो वर्क ट्रांसफ़र इज़ द एनर्जी इन ट्रांजिशन और ट्रांसफ़र दैट टेक प्लेस other than temperature difference. Then all form of energy that can be transferred other than temperature difference, that is known as work transfer or work energy. Suppose paddle wheel work. Suppose take an example of work transfer. Suppose we have a beaker and in this beaker there is a water and sugar and we are just taking a stirrer, just like a spoon. और इस स्टिरर को हमने क्या किया? एक रोटेशन दिया. तो रोटेशन देने के बाद क्या होगा कि शुगर इस पे यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगी. लेकिन आपने यहाँ पे हीट या ये कह लें कि यहाँ टेम्परेचर का कोई भी कंसेप्ट नहीं लगा. आपने क्या करा? स्टिरर को या एक स्पून को क्या किया? उसको आपने एक वर्क दिया. उस वर्क की वजह से क्या हो रहा है कि इनसाइड द सिस्टम, सपोज करिए सिस्टम है, इस पर क्या हो रहा है? एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है. तो विदाउट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है. दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वर्क ट्रांसफ़र. तो पैडल व्हील, ये हम बात कर लें कि पैडल व्हील वर्क और स्टीयरिंग वर्क, shaft work, electric work, all are the examples of work transfer or work energy. So these are the basic concept of energy related to the thermodynamics. And this is the another, you have already studied this concept of when the heat is transferred inside the system or work is done by the system. So heat transfer on the system is always positive. Suppose that heat is transferring on the system. Suppose this is the system and we are transferring heat on it, then it will always consider as positive. And after that heat transferred by the system, where any system is releasing heat, then it is always in negative. So this is the transfer of heat into the system or by the system. Now we are talking about transfer of heat, work transfer. So heat transfer we have understand. Now we are talking about work transfer. Suppose work is transferring on the system. Okay, this is W. Okay, suppose work is transferring on the system, that is always be negative, and work done by the system, it is always as positive. It is not negative. Work transfer by the system is always negative. So we have understand. Now we are moving towards the first topic of this course, applied thermodynamics, that is the heat engine. So let's start.
So heat engine is nothing but it is a device which is operating on a thermodynamic cycle whose sole aim is to convert heat energy into useful work done. Okay, so it is a device which is operating in a thermodynamic cycle whose sole aim is to convert the heat into work. Suppose this is the heat engine. It is a device that is operating in a thermodynamic cycle. You have already studied about thermodynamic cycle in the previous semester. So to understand this concept or the concept of heat engine, we have to understand what are the concept of source and what are the concept of sink. Source are those body which are at a higher temperature. और ये आप ऐसे समझ लें कि सोर्स वो बॉडी होती है कि अगर जिससे आप सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी ले लें लेकिन उसके ओरिजिनलिटी पे या उसकी बल्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अगर उसका टेम्परेचर प्रीवियस भी T1 था तो उसके कुछ एनर्जी लेने के बाद भी आपका टेम्परेचर एज इट इज T1 रहेगा. ठीक है. सपोज टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वोल्केनो. Volcano have tremendous amount of energy. If we are just taking a one bucket of lava, molten lava from the volcano, that it does not change the temperature of the volcano. So that is considered as a source. And what is sink? So sink is nothing but, take an example from the sea. Suppose we have sea and we are just pouring one bucket of water into the sea, but the temperature of sea doesn't change. अगर हम सी पे एक बकेट पानी डाल दें सी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. तो जो भी चीज़ हायर टेम्परेचर पे रहेगी और दैट इज़ नोन एज सोर्स, और जो भी चीज़ लोअर टेम्परेचर पे रहेगी दैट इज़ नोन एज सिंक. ओके. तो हीट इंजन हमारा क्या है, इज़ अ डिवाइस है जो कि हीट लेता है या फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर फ्रॉम सोर्स. ये आपका सोर्स से इसने हीट ली और उसने क्या किया, वर्क डन को प्रोड्यूस किया बाय लिबरेटिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी टू द सिंक. एक सोर्स से एक हीट ली उसने और वर्क डन प्रोड्यूस किया और जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी बची उसने क्या उसको रिलीज कर दिया, सिंक पे रिलीज कर दिया. दैट इज नोन एज हीट इंजन. सो suppose Q1 amount of heat is supplied in the heat engine and W net is the work done by the heat engine, and certain amount of energy that is known as Q2 is released in the low temperature sink. As we know that efficiency is nothing but output upon input. So in this heat engine, what is output? The work done. And what is input? The heat supply. So the work done W, or we are writing here W upon Q1. But what is W or the work done? It is nothing but the difference of heat. Suppose we are supplying heat Q1 and Q2 heat is rejected, then by subtracting Q1 from Q2 we will find what is the work done. So efficiency equal to work done upon heat supply, and work done equal to Q1 minus Q2 divided by Q1, or we can say finally we will find efficiency equal to 1 minus Q2 upon Q1. Okay, that is the efficiency of the heat engine. So this heat engine tells the or confirm what is the statement given by the Kelvin and Planck of the second law of thermodynamics. By understanding the heat engine, we will easily understand what is the first statement of the second law of thermodynamics. तो ये भी आपका पिछले सेमेस्टर का ये आपका टॉपिक है बट इट इज़ रिलेटेड टू द हीट इंजन, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग हियर. सो अकॉर्डिंग टू द Kelvin Planck, it is impossible for the heat engine operating in a cycle or operating in a thermodynamic cycle to produce net work done by exchanging heat with the single reservoir or with the body at a fixed temperature. means आपका ये कि अगर ये आपका हीट इंजन है, ये विद अ सिंगल रिजर्वायर, सपोज करो सोर्स ये आपका हाई टेम्परेचर सोर्स है, इससे अगर ये हीट ले और सिर्फ वर्क डन प्रोड्यूस करे, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता. ये सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी या सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट ऑलवेज रिजेक्ट करेगा. ठीक है. तो यही हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहता है कि ऑपरेटिंग इन अ थर्मोडायनेमिक साइकिल टू प्रोड्यूस नेट वर्क डन
बाय एक्सचेंजिंग हीट विद अ सिंगल रिजर्वायर, ये इम्पॉसिबल है आपका। इसको दो रिजर्वायर से आपको एक्सचेंज हीट करनी पड़ेगी, एक सोर्स से हीट लेनी पड़ेगी और सिंक पे हीट रिजेक्ट करनी पड़ेगी। दैट इज़ द statement 1 of the second law of thermodynamics. So we have understand what is heat engine and how it is related to the first statement first of the second law of thermodynamics. Now we are just briefly talking about the second statement of second law of thermodynamics. It said that it is impossible to construct a device operating in a cycle and produce no effect other than the transfer of heat from a lower temperature to higher temperature. तो क्लॉसियस ने कहा कि कोई भी बॉडी है कि वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफ़र नहीं करेगी विदाउट द एड ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है देन इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ इंजन और अ डिवाइस टू ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम अ लोअर टेम्परेचर टू द हायर टेम्परेचर। मीन्स कि अगर ये कोई डिवाइस है लोअर टेम्परेचर पे, ये हायर टेम्परेचर पे हीट सप्लाई नहीं करेगा अदर देन बीच में आपको कोई एक्सटर्नल एजेंसी, आपको एक्सटर्नल सोर्स देना पड़े। ठीक है, तो आपका कॉमन एग्जाम्पल या कॉमन डिवाइस रिलेटेड टू द सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द हीट पंप। तो हीट पंप इज अ डिवाइस विच इज ऑपरेटिंग इन अ थर्मोडायनेमिक साइकिल विच मेंटेन्स अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर by taking heat from the low temperature source and also by absorbing energy in the form of work। तो हीट पंप क्या होता है कि सपोज करिए कोई बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर पे है, वो क्या करेगी, सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज़ करेगी। सपोज करिए हाई टेम्परेचर सोर्स Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ बॉडी को मेंटेन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बॉडी पे Q1 अमाउंट की हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो Q1 अमाउंट की हीट कहाँ से देनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, एक डिवाइस लिया हीट पंप जिसे कहते हैं, तो इसने क्या किया, लोअर टेम्परेचर से हीट को एक्सट्रैक्ट कराया। ठीक है, और वर्क डन इसने एब्जॉर्व किया। तो Q1 और Q2 क्या हो गया, हीट पंप के लिए इनपुट हो गया, और हीट पंप के लिए जो चीज़ इनपुट हुई उसने क्या करा, उसको हाई टेम्परेचर सोर्स पे सप्लाई कर दिया ताकि ये बॉडी क्या करे, हमेशा हायर टेम्परेचर पे मेंटेन रहे। ठीक है, सो आई एम जस्ट ब्रीफिंग what I have studied, what we have talking about in this slides. The first one, we have understand what are the basic concept of energy. It is important because in this subject in all units, in all the numericals, its concept will be used, and after that we have tried to understand what is the concept of heat transfer and work transfer. Now we have talked about what is heat engine and how it is related to the second law, what is heat pump and how it is related to the second statement of the second law of thermodynamics given by the Clausius. Now by talking about the basic definitions or the basic idea of previous semester, now we are talking about now we are moving towards our second topic, that is known as engine. So in your course we will try to understand what is the concept of engine or what is the classification of engine, especially in internal combustion engine. So let's move toward the engines. What is engine? You have all studied, you have all heard several times, and in the market, in your house, in the schools, this word that is known as engine. So what is engine? Now basic definition of engine is nothing but a device which convert one form of energy to the another form. इंजन क्या है, एक डिवाइस है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी पे कन्वर्ट करता है। ठीक है, और इसके कई सारे क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ कम्बशन। अगर हम ये कहें कि इंजन में कम्बशन कैसा हो रहा है, ठीक है, एक ये है कि इंजन के अंदर कम्बशन हो, पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है। सपोज करिए ये आपका पिस्टन सिलेंडर का आपका अरेंजमेंट हो गया, इसके अंदर आपका कम्बशन हो रहा है, ये फ्यूल है। अब फ्यूल पे क्या हुआ, फ्यूल पे आपने हीट सप्लाई दी, आफ्टर द सप्लाइंग ऑफ हीट द फ्यूल बर्न एंड ट्रेमेंडस ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, दैट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ इंटरनल कम्बशन इंजन। बट व्हाट इज एक्सटर्नल कम्बशन इंजन? एक्सटर्नल कम्बशन इंजन just saying when the combustion of fuel takes place outside the engine. So now we are talking about the example of internal combustion and external combustion.
Now we have first taken the definition of external combustion engine, when the combustion of fuel take place outside the engine. For example, in the case of a steam engine. In case of a steam engine, first, what is the basic concept? There is a boiler, and what is the function of boiler? To heat the water and convert the water into steam at a high temperature, and that steam will go inside the engine, which is helpful for the motion of the engine or the motion of the vehicle, or we can say setup. So this boiler or the combustion of fuel take place inside the boiler, not inside the engine. Means the combustion of fuel take place outside the engine. So that will comes to the category of external combustion engine. And what is internal combustion engine? Combustion of fuels take place inside the engine. For example, in the case of petrol engine, diesel engine, or specifically say in the case of bikes or cars or heavy vehicles like trucks, the main, we can say, the drawback of IC engine is that in case of environmental point of view, apart from the residual gases liberated by the internal combustion engine, due to the burning of fuel, tremendous amount of energy is released, and this tremendous amount of energy creates so much temperature, or rise in the temperature and rise in the pressure. So due to this, there is a loud noise is developed inside the engine, so that create the noise pollution. So now moving towards the, or more topic, taking the classification of internal combustion engine. There are different category. इस कोर्स में हम ज़्यादा एक्सटर्नल कम्बशन इंजन के से हट के हम इंटरनल कम्बशन इंजन के बारे में स्टडी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आप लोग का कोर्स में मतलब इंटरनल कम्बशन इंजन व्हाट आर द टाइप्स हैं, उसके बाद पेट्रोल और डीजल की कैटेगरी आ जाती है. तो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल कम्बशन इंजन. सो इंटरनल कम्बशन इंजन आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ग्रुप्स, depending upon the types of fuel, depending upon the modes of combustion, depending upon the number of stroke, depending upon the operation of cycle, how many cylinders are there. So now we are talking for the classification of internal combustion engine. First is the according to the types of fuel used. Normally we are using two types of fuel that will come under the category of gasoline. First one is the petrol, second one is the diesel. All the vehicles in our country, or in the, say, in the world outside from our country, that use two types of engine. First one is the petrol engine and other one is the diesel engine. There are also different types of fuels available for the jet propulsion or the aerospace point of view, but our main concern is the पेट्रोल इंजन एंड द डीजल इंजन. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ इग्निशन, कि हम उसको इग्नाइट कैसे कर रहे हैं. अगर हम सपोज करिए पेट्रोल की बात करें, तो पेट्रोल हमारा सिलेंडर के अंदर जाएगा. हाउ वी आर इग्नाइटिंग द दिस फ्यूल. सो डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ इग्निशन, देर आर टू टाइप्स ऑफ इंजन. फर्स्ट वन इज द स्पार्क इग्निशन इंजन, सेकेंड वन इज द कंप्रेशन इग्निशन इंजन. इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे. सो आफ्टर दैट देर आर नंबर ऑफ स्ट्रोक. ये आप लोग सब जानते हैं कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रोक. फर्स्ट वन इज द 2 stroke, 4 stroke. ऑल द बाइक्स अवेलेबल in the market are generally in the 4 stroke category, but previously the some scooters and the motorbikes like RX100 are comes into the category of 2 stroke engine. What is the operation cycle of the engine? Depending upon the operation of cycle, we are classifying the internal combustion engine. First one is the Otto cycle, diesel cycle, dual cycle. The difference in the Otto cycle, dual cycle and diesel cycle are also depending upon the types of fuel we are using. हम किस तरीके का फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, उसके corresponding में भी हम क्या कर सकते हैं कि इसको कैटेगराइज कर सकते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर, मल्टी सिलेंडर. देयर आर डिफरेंट बाइक्स अवेलेबल इन द मार्केट हैव मोर देन 1 cylinder or the twin cylinder. Generally bike or the commercial bike that we are seeing is come in the category of single cylinder. So these are the classification of internal combustion engine. Now moving towards the, after us understanding what are the classification, now we are moving towards the basic terminology related to the internal combustion engine. So this terminology are very helpful to understand what is the
two stroke engine or the what is the petrol engine or the diesel engine, because some parts are very much common in the case of petrol engine and the diesel engine. So it is very important to understand what are the basic terminology related to the internal combustion engine. So there are some normal words that you have already heard. There is the piston cylinder arrangement and there is a crank. This circular part is the crankcase. So taking from the left of the figure, it is written an inlet valve. What is inlet valve? Inlet valve is a valve that is used to put inside the charge कि ताकि हमारा फ्यूल इसके सिलेंडर और पिस्टन के अंदर आ सके. ये इनलेट वाल्व का यूज़ ये है. और ये आपका इनलेट स्ट्रोक या ये कह लें हम कि सक्शन स्ट्रोक पे आपका ये इनलेट वाल्व खुलेगा. ठीक है. ये आपका स्पार्क प्लग है, एक इक्विपमेंट. स्पार्क प्लग का काम क्या होता है कि जब भी फ्यूल इनसाइड द, या ये कह लें कि जब भी एयर और फ्यूल आपके इस सिलेंडर के अंदर में आ जाएंगे, वो हाई प्रेशर पे क्रिएट हो जाएगा, तो ये स्पार्क देगा जिसकी वजह से आपका कंबशन टेक प्लेस होगा. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ आउटलेट वाल्व? व्हेन द कंबशन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस and the tremendous amount of energy is used, there are also some residual gases inside the cylinder, and this outlet valve is helpful to escape this residual gases. Okay. There is a word bore and bore diameter. The bore diameter is nothing but is the diameter of the cylinder. There is a word piston. This is the piston that we are seeing here. So what is the function of piston? The main function of the piston to compress the fuel or to compress the charge, so that it at a high temperature and pressure, so that it is easier for the combustion process. And there is another part, there is the connecting rod. What is the function of connecting rod? The connecting rod connect the piston to the crank. This is the piston and this is the crank. It is the connective link between piston and the crank. These are the some basic parts related to the IC engines. Now we are talking about what are the terminology related to it. तो ये आपका पिस्टन जो होता है कि एक मैक्सिमम टॉप पोजीशन पे जाएगा. ठीक है. और उस टॉप पोजीशन को ये हम ये सपोज करिए मैंने एक ये लाइन ड्रॉ करी, ये टॉप पोजीशन है. पिस्टन मैक्सिमम इसी पोजीशन तक जा सकता है. जब पिस्टन इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे? टॉप डेड सेंटर, TDC. और एक्सट्रीम बॉटम पोजीशन पे पिस्टन अगर रहेगा, सपोज करिए ये लाइन, तो ये आपका किस कैटेगरी है? उसको हम क्या बोलेंगे? बॉटम डेड सेंटर. तो एक्सट्रीम लोवेस्ट पोजीशन ऑफ द पिस्टन इज नोन एज बॉटम डेड सेंटर एंड द एक्सट्रीम अपर पोजीशन ऑफ द पिस्टन इज नोन एज टॉप डेड सेंटर. ओके. So the length between top dead center and the bottom dead center is known as stroke length. The length between top dead center and the bottom dead center is known as stroke length or stroke. मतलब कि जितनी पिस्टन टॉप पोजीशन पे जा रहा है, बॉटम पोजीशन पे जा रहा है, जो जितनी लेंथ आपकी है, that length is known as stroke length. So these are the some basic terminology related to the IC engines. We have already understand what is TDC, the extreme upper position of the piston. अगर ये अभी पिस्टन सपोज करिए अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये TDC पे है, टॉप डेड सेंटर. और इस टॉप डेड सेंटर के ऊपर जितना भी फ्यूल आपका होगा, जितना भी वॉल्यूम होगा, दैट इज नोन एज क्लियरेंस वॉल्यूम. ओके. इस टॉप डेड सेंटर के ऊपर जो भी फ्यूल होगा उसको कहेंगे क्लियरेंस फ्यूल, और ये जो वॉल्यूम कवर करेगा दैट इज नोन एज क्लियरेंस वॉल्यूम. ओके. TDC के ऊपर. ठीक है. तो इसको थोड़ा सा और क्लियरली समझ लेते हैं. क्लियरेंस वॉल्यूम हम समझ गए कि TDC के ऊपर जो भी वॉल्यूम कवर होगा दैट इज नोन एज क्लियरेंस वॉल्यूम. और पिस्टन जब टॉप पोजीशन पे चला जाएगा तो उसको कहेंगे TDC. पिस्टन जब बॉटम पोजीशन पे चला जाएगा दैट इज नोन एज BDC. सो द लेंथ between TDC and BDC is known as swept length, and the volume between TDC and BDC is known as swept volume. This is the working area of the
piston or the IC engines. So these are some basic terminology related to the internal combustion engine. So in this the end of the slides, or we can say end of this presentation. So in the next presentation we will try to understand what is the petrol and diesel engines and what are its working cycle. Okay, thank you.